Hello everyone, welcome back to my channel Maths Wale MK Sir. In today's session we are going to solve few problems based on classification as rational and irrational numbers. So let us start the session. So the first question given is classify the following numbers as rational or irrational. जिसमें से पहला क्वेश्चन है square root of 23. Now we know that 23 is a prime number, correct? And square root of prime number is always an irrational number. अब ये मैंने rational और irrational के definition के time ही बताया हुआ है, right? So we say that as 23 is a prime number, root 23 will be an irrational number. Next, square root of 225. Now the value of square root of 225 is 15, correct? And we know that 15 is a rational number, correct? So root of 225 is a rational number, correct? Next, 0.3796. अब ये डेसिमल एक्सपांशन कैसा है? इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन, और टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन है, इसका मतलब वो नंबर कौन सा है? इट इज अ रैशनल नंबर. ये हमने प्रीवियस सेशन में ही देखा हुआ है, राइट? एज it has a terminating decimal expansion, it is a rational number, correct? Next, 7.478478 and so on. अब यहां पर जो डिजिट्स है 4 7 8, ये डिजिट्स क्या हो रहे हैं? दे गो ऑन रिपीटिंग, राइट? दे गो ऑन रिपीटिंग. दैट मीन्स दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन. तो ऐसा डेसिमल एक्सपांशन किसका होता है? अगेन रैशनल नंबर का, correct? So as it is having a non-terminating repeating decimal expansion, it is a rational number. Clear? Next, 1.10, 100, 100 and so on. अब ये decimal expansion कैसा है? It is non-terminating, non-repeating decimal expansion. और ऐसा decimal expansion किसका होता है? Irrational number का, correct? So as it is having non-terminating, non-repeating decimal expansion, so it is a irrational number. समझ में आ गया? ये easy है. Next, check whether 7 root 5, 7 upon root 5, root 2 plus 21, pi minus 2 are irrational numbers. तो अगर आप पहला नंबर देखोगे 7 root 5, तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? It is a product of rational and irrational number, correct? 7 is a rational number and root 5 is an irrational number. और हमने प्रीवियस सेशन में ये डिस्कस किया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ रैशनल एंड इरैशनल इज ऑलवेज एन इरैशनल नंबर. प्रोडक्ट ऑफ रैशनल एंड इरैशनल इज ऑलवेज एन इरैशनल नंबर, राइट? नेक्स्ट, 7 अपॉन रूट 5. फिर से यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? 7 is a rational number, root 5 is an irrational number, and we know that if we divide rational by irrational, the answer is irrational, right? आप यहाँ पर देख सकते हो root 5 is an irrational number, and as quotient of non-zero rational and irrational is irrational, the given number is an irrational number. Next, root 2 plus 21. Now root 2 is an irrational number and 21 is a rational number. और ये भी हमने देखा हुआ है, sum of rational and irrational is always irrational, correct? Sum of rational and irrational is always an irrational number, correct? Next, pi minus 2. Now pi is an irrational number and 2 is a rational number, and the difference between rational and irrational is always an irrational number, right? The difference between rational and irrational is always an irrational number, correct? Next, classify the following numbers as rational or irrational. जिसमें से पहला नंबर है 2 minus root 5. अब 2 है rational number, root 5 है irrational number, and we know that the difference between rational and irrational is a irrational number, right? So as the difference between rational and irrational is a irrational number, 2 minus root 5 is an irrational number. Clear? Next is 3 plus root 23 minus root 23. तो अगर आप इनको सॉल्व करोगे तो ये root 23 कैंसिल हो जाएगा.
आंसर क्या बचेगा, सिर्फ 3. एंड वी नो दैट 3 कैन बी रिटन एज 3/1, दैट इज इट इज अ रैशनल नंबर. करेक्ट, इजी. नेक्स्ट, 2√7 अपॉन 7√7. अब ये √7 भी कैंसिल हो जाएगा, √7 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, सिर्फ 2/7. दैट मीन्स अगेन 2/7 इज अ रैशनल नंबर. करेक्ट, so the given number is a rational number. Next, 1/√2. Now 1 is a rational number and √2 is a irrational number, and we know that if we divide rational by irrational, the answer will be irrational. Correct, as we know that the quotient of non-zero rational number and an irrational number is always an irrational number. We say that 1/√2 is an irrational number. समझ में आ गया है? इजी क्वेश्चन है ये तीनों भी. अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी. थैंक यू.